I just want to clarify, रविशंकर है, हम लोग आज criticize नहीं कर रहे रोहित को. We just want him to play as much as he can, and we just feel that for me, the captaincy is a burden. Okay, Sal, I'll come to you. 19 नवंबर को हम वर्ल्ड कप हारे, 26 दिसंबर को आपकी स्टार्ट हुई थी, more than a month. I mean, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता था इसके बीच में. ठीक है, मूव ऑन तो करना ही था ना. 19 नवंबर को आप 20 नवंबर वापस तो नहीं ला सकते थे. यू लॉस्ट द वर्ल्ड कप, आप एक हफ्ता उसका दुख मना रहे थे. उसके बाद no one could have a conversation because ठीक है, what if God forbid Rohit Sharma gets injured and doesn't play the next game or doesn't play 3 matches in England series? Where do you go? You go to Bumrah or you go to KL Rahul? Bumrah is designated vice captain, but कहाँ जाओगे आप? So ये words, ये conversations क्यों नहीं हो रही अभी भी? Despite losing ICC trophies for 10 years, हमारे management और हमारे board में ये conversations क्यों नहीं होती? What do you have to say? No, because we are very happy with 10-0 ना. हम 10-0 से बहुत खुश हैं. हम पूरा वर्ल्ड कप निकल गया अनबीटन, द जगरनॉट कंटिन्यूज. हमने भी लिखा, हमने भी बोला, we also kind of echoed the feeling which was around that, you know, the team is on a roll. But November 19th, V minus Chetan. हाँ? V minus Chetan Narula, no? If there was one person, even Jamie was impressed by 10-0, I was not. नहीं, V minus चेतन नरूला ना भाई. चेतन शर्मा. चेतन शर्मा नहीं काउंट होता यहाँ पे. आई थिंक वो एक जो हमें ऑब्सेशन हो गया था ना वो 10-0 के बाद का, उसके बाद मतलब वर्ल्ड कप के बाद वर वी काइंड ऑफ, डिड वी हैव अ डायलॉग? जो मीटिंग हुआ अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़, वहां पे क्या बात हुआ? वाज द कोच टोल्ड दैट, यू नो बॉस, you need to stop needling the pitches, you need to stop doctoring the pitches, you need to stop with your obsession of pitches? It is not stopping, boss. Border Gavaskar trophy से every day, every session, every start of play, every end of play, that man was right next to the 22 yards. वो एयरपोर्ट से अपने होटल नहीं जाते थे वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान. First thing he used to do was, with the support staff, they used to go to the center, they used to see the pitch, talk to the curator. अब आप curator से 1 day before the game, 2 day before the game, ऐसा क्या रामबाण चला दोगे विकेट के अंदर यार, except probably shaving the excess grass, rolling in some live grass, हार्ड रोलर, सॉफ्ट रोलर. मतलब जितना मैं पिच को समझता हूँ, उस ये 4-5 चीजों के अलावा यू कांट डू मच, अनलाइक अ टेस्ट मैच वेयर यू कैन लाइक वाटर certain areas certainly and get that roughness around certain areas. But why was all that required, and why is all that still required? And I'll be not surprised, क्योंकि सेकंड टेस्ट भी हम हारने वाले हैं, तो जब इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट होगा उससे पहले फोन चले जाएंगे. धर्मशाला में तो अभी तक फोन जा चुका होगा कि अपना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइजर जो भी डालना है सब डाल के कर दो. धर्मशाला में भी ये खुरपा बना देंगे. तो मतलब कीट का क्या करोगे? वही बोल रहा, मतलब इतना ऑब्सेशन विकेट से. तो ये डायलॉग किसी ने करा, बीसीसीआई में किसी ने बात करी, वाज दैट पिच रिक्वायर्ड, और वर पीपल इन द बीसीसीआई ऑन द सेम पेज व्हेन वी चोज दैट सरफेस? आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड चांस प्लेइंग ऑन अ ट्रू सरफेस. एंड you know, there were certain members of the Indian cricket team who told photographers as well कि why are you clicking pictures of the soft roller going on or the heavy roller going on? मतलब इस कदर पिच को लेके, मतलब बैक ऑफ द माइंड इनसिक्योरिटी चल रहा था कि विकेट को इतना अटेंशन आपने दे दिया एक फाइनल क्लैश के लिए. सो दीज डायलॉग्स नीड टू हैपन, यू नो. एंड चेतन, आई कंप्लीटली अग्री ऑन द फैक्ट दैट, यू नो, राहुल द्रविड़ वाला एक्सटेंशन, I don't know whether they were caught off guard, whether they were still thinking कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, सब कुछ ऑटो पायलट मोड में चलता रहेगा. Busy with the IPL. No, extension. Let's be honest about it, ना यार. They were busy with the Okay, IPL. I'll welcome IPL auctions आ रहे थे, women's auctions आ रहा है, men's auction आ रहा है, so they did not have time to select a coach. पर ऐसा थोड़ी है कि बीसीसीआई सरकारी दफ्तर है कि एक ही आदमी सब कर रहा है. मतलब I kind of understand the fact that ये ज्यादा बीसीसीआई तुम फॉलो करते हो यहाँ पे श्रीनिवास राव के बाद, और तुम ही ये कह रहे हो कि मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर है तो फिर तो शटर डाउन करने वाला सिचुएशन है कि if only we are saying कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते. मतलब ये तो वही बात होगी ना कि रणजी ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है तो अभी इंडिया के मैच के लिए हम ब्रॉडकास्ट कैसे करेंगे? लाइक ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. मतलब अगर आप होना चाहिए या नहीं चाहिए, what you are saying. Be honest about it. I'll take a comment from Srini. Srini, welcome to Cricket Nest first of all, and we've been talking about you know, is the captaincy now becoming a burden for Rohit Sharma, the batter? So what do you have to say in the first place? What are your thoughts about it? Because the way he got in the first inning, you know, when things don't go your way, everything begins to look bad. You know, when was the last time you lost so disastrously?
overseas, like, and especially in South Africa, by any innings, like, इतनी बुरी तरीके से without a fight तुम हारे हो, मतलब तुम लास्ट, तो वो अगर उस हिसाब से WTC देखोगे final. तो नहीं, WTC final. नहीं, 209 साउथ run अफ्रीका, beat. साउथ अच्छा, अफ्रीका, South साउथ Africa. Yeah, sorry. अफ्रीका में. So when something like this happens, obviously you, like, you are in a depressed state of mind, and then nothing begins to look good, right? Then you begin to question everything, how he's been using his bowlers, like how exactly is he motivating his side, how exactly is he kind of motivating, the top order, everything, kind of. I've seen so many tweets. Everybody's an expert, talking about him being a clueless captain. हर किसी को क्रिकेट अभी समझता है. अभी ऐसा हो गया है कि हर किसी को क्रिकेट समझता है रोहित को छोड़ के. तो इतना भी मत करो. वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप हारते हो तो वो दुनिया की रीत है. मतलब आप किसी भी चीज में फेलियर काइंड ऑफ ब्रिंग्स आउट थिंग्स व्हिच अदरवाइज जो है वुड हैव बीन शव्ड अंडर द कार्पेट, राइट? एंड आई दैट्स वेयर द इम्पोर्टेंट थिंग इज what Chetan said yesterday about the previous chief selector. He said, the guy has blood on his hands. I'm not going to blame today. I'm not going to blame a Rohit Sharma. Yeah. For me, the larger consequence lies in how Indian cricket has operated over the last 2.5, 3 years. You're not going to. What are we expecting? Do you expect a Gaba to happen every time that India walks out on the field? Is that what you are, that's a once in a century kind of a thing. You literally have to do the right things in order to kind of achieve the kind of results that you are desiring. The question is, you need to go back to square one and see, if those efforts have been put in place. Yeah. Clearly, we all, I mean, हम चारों के बीच में भी no, and you ask any random guy out there, that obviously that has not been the case. अभी कल ही कौन साहिल ही बात कर रहा था आवेश खान के बारे में. Yeah. इंडिया ए टूर पे आज तुम अनाउंस करते हो वो टीम में आज आ गया है, तो तुमने क्या ऑन द बेसिस ऑफ दोस 5 विकेट्स तुम उसको टीम में ले आए हो? तुम्हारा क्या विजन है कि कल 5 विकेट ले लिया, आज टीम में ला लो, अच्छे. हु इज गोइंग टू लुक गुड? यू, आवेश, बीसीसीआई, सेलेक्टर्स, कैप्टन, इंडियन टीम, हु? I think they're looking a fool right now. Ki they did not have him in the squad in the first place. Why were you waiting for this 5 wicket haul? By virtue of giving him this opportunity, now you're looking like a bigger fool, because I don't know what you're doing. Are you admitting the fact that this guy should have been there in your kind of 15 in the senior squad? No, so let's be honest about it. Nashini, let's be honest about it. ठीक है? अजीत अगरकर कब आए टीम सिलेक्शन कमेटी में? After the West Indies squads had been announced. ठीक है? After the West Indies squads had been announced, Ajit Agarkar came into the picture. इतना बुरा हाल था that the ODI T20 squads had been announced and he had to fly to West Indies to talk to the team management कि बॉस आप कैसे प्लान कर रहे हो ODI World Cup के लिए. Okay? That's where the whole situation started. वहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली did not play ODI cricket. That was all put in circle over there. So when we talk about test cricket, ठीक है, वो सीरीज आपका निकल गया. उसमें आपके फास्ट बॉलर्स कौन थे? आपने मुकेश को दिया डेब्यू, एंड यू हैड वन अपॉर्चुनिटी टू ब्लड एन आवेश खान or somebody else or an Arshdeep Singh maybe, but you played Jaydev Unadkat over there. Why did you play Jaydev Unadkat there? You took Jaydev Unadkat to Bangladesh as well. वो किसने सेलेक्ट किया था? वो तो चेतन शर्मा की सिलेक्शन कमेटी ने ही सेलेक्ट किया था, राइट? तो दिस इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट. आपकी पिछली सिलेक्शन कमेटी ने कोई नए बॉलर को ब्लडिंग दी ही नहीं है. In Bangladesh, you could have taken an Avesh. You could have taken anybody who had done well in Ranji Trophy, even decently well. मैं ये नहीं कह रहा हूँ somebody needs to take 80 wickets in Ranji Trophy. अगर किसी ने 40-50 भी लिए थे, नहीं. लेकिन आपको जयदेव उनादकट को एक फेयरवेल सीरीज देनी थी. आपने बांग्लादेश में भी दी, आपने वेस्ट इंडीज में दी. 4 टेस्ट मैचेस you could have bloodied. You could have blooded in a new fast bowler. So this is a cycle that continues from selection committee to selection committee. पिछली selection committee आपको कुछ नए players देके जाएगी, तभी तो नई selection committee करेगी ना. But right now, today, Ajit Agarkar selection committee has nobody to choose. That's why they are picking Avesh Khan on the basis of one man. उनके तो हाथ बंधे हुए हैं. I feel that, so in the entire scheme of things, when Chetan Sharma was the chief selector, he was the weakest link in that entire chain. Kaptan alag level pe, coach India ka bada naam hai.
Chetan Sharma from day one, not just the second stint, even the first stint. Chetan Sharma from day one was a misfit. Yeah. वो मतलब you know रास्ते पे पड़ा हुआ मिल गया तो उठा के सिलेक्टर बना दिया वैसा वाला. I'm sorry, I don't want to disrespect, but that is how it came across. You know, so like I said, who was the head of the CAC? His good friend Mr. Madan Lal. I have so immense respect for Mr. Madan Lal and what he's done for Indian cricket, but you could see how it happened, how it transpired. Yeah, Ashwin. so you know, I in fact I remember that was one of the last ever one of those last ever BCCI meetings that I probably have attended as somebody covering. वो मदन लाल जब वो CAC का मीटिंग अटेंड कर रहे थे दिल्ली में, वो नहीं बॉम्बे में आए हुए थे, तो बोले किसी तो चेतन शर्मा का नाम लिया गया. मैंने कहा क्या हुआ, कोई और आया नहीं? हाँ, नोबडी एल्स अप्लाइड. मैंने कहा ये खुश होने की बात है, यहाँ पे तो आप चुल्लू और पानी में डूब मरो और कोई आया नहीं. आप इंडियन क्रिकेट हो, यू आर द सो कॉल्ड वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड, आप मेरे को कह रहे हो कि आपके पास एक भी CV नहीं आई है, तब क्या बोलूं मैं? मतलब this is how you are going to operate. So anyways, let's say the better. I mean, I don't just hold one or two individuals. The whole system is responsible for the rot. श्रीनी, यहाँ पे एक और चीज भी आपके आने से पहले मैंने मेंशन की थी कि when Rohit Sharma became Test captain, I think we should also address that. Should he have become Test captain at that? Should India have looked for another possible option? I agree with you completely because appeasement seems to have become the norm in Indian cricket. You are doing something to more out of the fear that okay, यहाँ पे ना मैं safe खेल रहा हूँ, ये डिसीजन ले लूंगा ना, मैं सेफ हूँ, यहाँ पे लोग मुझे पब्लिक जो है मुझे गाली नहीं मारेगी. तो मैं राहुल द्रविड़ को कोच बना रहा हूँ. मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ बिकॉज राहुल द्रविड़ डिजर्व्स टू बी the coach of the Indian team, or especially white ball cricket, especially keeping in mind the number of white ball tournaments that we have in the calendar year. By virtue of, you know, what he brings to the table, does he need to become the coach? Maybe not. But I know that if I were to name Rahul Dravid as a coach, I'm not going to receive brickbats for it. Or rather, you know, proportionately, I'll receive more bouquets than brickbats. Okay? Same is the case with Rohit Sharma. When Virat Kohli resigned as the captain of Test cricket, first of all, I think had there been any other BCCI in place, they would have tried to convince Virat to stay back as captain. Okay, at least in Test cricket, yeah. Yeah, I don't think even now Indian cricket realizes the after effect to which it has damaged Indian cricket. Virat stepping down as captain. But anyways, जो होना था वो हुआ. Administration, less said the better. मैंने बहुत ट्वीट किया है about कौन कुर्सी पे बैठा था, क्या किया विराट के और रवि के पीठ पीछे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. At one point, Ravi himself said, you know, bhai, I want to also stay away from this nonsense. My commentary is calling me back, you know. So he wanted to go. So obviously wrong things were done. I mean, you know, and this is for BCCI internally. मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं यार by saying something for which I can't prove it, you know. So I'd rather stay away from all that. So anyways, the point is, विराट स्टेप डाउन कर रहा था. You decided मेरे को एक ऐसा नाम चाहिए जिसमें मैं गाली नहीं खाऊंगा. देखो, रोहित का व्हाइट बॉल कैप्टनसी बनता था. There is no doubt about it. Rohit was the best candidate to take over as white ball captain, and which he did. वो भाई इसको सक्सेस मिला नहीं मिला वो बात की बात है. सबको अपने अपने अपॉर्चुनिटीज मिले हैं. But at that time, I believe the time was right for them to select a captain with a futuristic perspective, because by now that captain and the young team would have been ready as India begins another 2-year cycle of playing in Sena countries. आप राहुल द्रविड़ की कोचिंग देखिए. Other than that previous tour of South Africa which we lost, हमने कोई बड़ी चैलेंजिंग सीरीज बाहर खेली नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में. और जब हम नया साइकिल शुरू करने वाले हैं, पहला सीरीज उसका वापस एज कोच हार के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं. ही इज गोइंग टू एग्जिट, ही इज नॉट गोइंग टू स्टे. He's not going to say. So what purpose has been achieved in this 2-year cycle by getting Rahul on board? I fail to understand. Anybody has a more convincing answer, please be my guest. Yeah. Zero purpose has been achieved by making Rohit Sharma the coach, a captain of the red ball team, and by making Rahul Dravid the overall coach of the Indian team. Which is why I said कि अगर आपको रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना है अभी, तो राहुल द्रविड़ should be removed as coach first.
Chetan, Sorry, I'll come just again? take a comment from Sahil first. Srini, I'll just take a comment from Sahil. Sahil, do you think, okay, we have been talking about कि हमें अच्छा दिखना था, अभी बोर्ड को अच्छा दिखना था, everything is fine. But this obsession of winning an ICC trophy, क्योंकि WTC cycle, WTC final pass में था and you didn't have a captain after Virat resigned. तो आपने उस ऑब्सेशन में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जहां आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखी. यू जस्ट वांटेड अ ट्रॉफी इन द कैबिनेट एंड यू जस्ट गिव इट टू रोहित शर्मा, और आपने खुद को भी टाइम नहीं दिया. डू यू थिंक दिस हैपेंड इन टेस्ट फॉर्मेट? I'll borrow Srini's lines from last night. You know, playing to the gallery. ये बीसीसीआई के अंदर बहुत apparent है जो डिसीजन मेकिंग चल रहा है ना, राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट वी हैव राइट नाउ, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर, यू नो, बिग पर्सोना, बड़ा नाम, बड़ा ओहदा. चेतन शर्मा को लेके मेरा 2-3 बहुत सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल से बात हुआ था जब वो सैक हुए, फिर रीइंस्टेट होने का बात हुआ. आफ्टर दैट ऑल दैट स्टिंग मैस एंड एवरीथिंग, वहां पे सामने से मेरे को लोगों ने आके बोला, अरे यार 100 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है यार, स्टिंग में तो उसका गलती नहीं था कुछ, 100 मैच खेला है, यू नो, चेतन शर्मा है, बड़ा नाम है, और कोई बड़ा नाम है नहीं. ये जो बड़े नाम का ऑब्सेशन है ना, आई थिंक आपको सिर्फ इसी कंट्री के अंदर दिखेगा. वरना एक चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर का बड़ा नाम होना जरूरी नहीं है, बड़ा दिल होना जरूरी है, जो मेरे को चेतन शर्मा का नहीं दिखा है अभी तक. दिखा था जो उनके 2 टर्म्स थे. 2 टर्म्स लग्जरी है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कि आपको 2 टर्म्स मिले हैं. मतलब इट्स अ बिग थिंग टू, यू नो, serve as chairman of selector for 2 terms. It's not a small thing, and he rightly, you know, he messed the entire setup up. अभी वेस्ट इंडीज टूर की चेतन ने बात की, मैं वो कैप्टन वाली बात पे आऊंगा सौम्या. वेस्ट इंडीज वाली बात पे जब वो जयदेव उनाडकट वाला इशू आया, मुझे क्लियरली याद है नवदीप सैनी का कॉल अप हुआ था उस सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड के अंदर. नवदीप सैनी वाज पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम फॉर वेस्ट इंडीज सीरीज. If you were not going to play him, why did you rob the poor kid an opportunity to play county? वो county खेल रहा था. He was in England. He was supposed to play his first match. He was stopped from playing that match. उसको पानी पिलवाया और वापस भेज दिया. क्या डेवलपमेंट करा आपने उसका, क्या ग्रोथ करा? उसका करियर पिछले 3-4 साल से ऐसे ही निकल गया है. जाओ नेट में बॉल डालो, पानी पिलाओ, वापस आ जाओ. इंडिया के 2 मैच, अगर आपको ग्रूम करना है, गेम टाइम दो ना बॉस. तो विजन तो कहीं पे है ही नहीं ना. And he was one of the brightest sparks in 2019-2020 when Navdeep Saini was considered to be one of the brightest sparks. He was supposed to be the next breakthrough bowler after Mohammad Siraj. और आपने क्या किया? He was in the team, हाँ. अभी तो 2019-2020 बोल रहा हूँ मैं. ODI मैचेस में बैट से भी जिता है, बॉल से भी जिता है. So he was supposed to be the next breakout bowler after Mohammad Siraj. I clearly remember when he started out for Delhi. I was very young, but we used to cover, जाते थे कोटला में, देखते थे क्या हो रहा है. Gautam Gambhir fought tooth and nail for Navdeep Saini. He went against the entire DDCA faction. बहुत rare कोई क्रिकेटर ऐसा करता है. एक टाइम पे बगावत किया था सहवाग एंड ऑल ने, when they staged the dharna and everything, when late Mr. Arun Jaitley was still in command. दिस टाइम गौतम गंभीर सबसे लड़ पड़ा था कि मेरे को नवदीप सैनी टीम में चाहिए. वो हरियाणा का था, डोमिसाइल इशू हुआ, सब कुछ हुआ. जितना गंभीर ने उसको खिलाया है दिल्ली के लिए, रोशन आरा के ग्रीन टॉप्स पे, वहीं से आपको नवदीप सैनी का राइस समझ आ गया था यार. तेज फेंकता था, 25-25 ओवर, 30-30 ओवर दिन में फेंकने का उसके अंदर कैपेबिलिटी थी. एंड्योरेंस लेवल्स वर राइट अप देयर. वो एकदम देसी, जिसको कहते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ लड़का था. वो अभी भी हिज वर्क एथिक्स आर राइट अप देयर. बट इट्स अनफॉर्चुनेट द वे यू हैव हैंडल्ड हिम. ही वाज क्विक, ही वाज ब्रिस्क, he had the ability to move the ball, अच्छा सीम पे हिट करता था, बट आपने उसको यूज नहीं करा. अब कप्तानी की बात रही, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा टीम अनलकी हो गई, क्योंकि अगर आपको याद होगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर केएल राहुल आपके वाइस कैप्टन थे. तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग था कि, यू नो, केएल राहुल इज नेक्स्ट इन लाइन टू बी द टेस्ट कैप्टन एंड ऑल दैट जैज. बट उसके 2 मैच खराब हुए. नॉट दैट सिर्फ वो 2 मैच खराब हुए, उसके बाद आपने वाइस कैप्टन ही हटा दिया टीम से. एंड केएल वाज ड्रॉप्ड फॉर द 3rd गेम इन इंदौर एंड शुभमन गिल ओपनड एंड ही स्कोर्ड 100 इन अहमदाबाद एंड probably the end of KL Rahul's opening career. फिर इंजरी हो गया, सब कुछ हो गया. फिर आप अजिंक्य रहाणे को लेकर आए वन ऑफ टेस्ट के लिए. आई थिंक वो WTC फाइनल में वाइस कैप्टन थे और वेस्ट इंडीज टूर में वाइस कैप्टन थे. No, WTC if I'm not mistaken. आई थिंक वन ऑफ द टूर्स के अंदर वो वाइस कैप्टन थे टेस्ट टीम के. अजिंक्य, आई थिंक वेस्ट इंडीज में ही थे यार. फिर वेस्ट इंडीज के अंदर अजिंक्य की 2, वेस्ट इंडीज में 2 बेकार इनिंग हुई, तो अजिंक्य को बोला आपका WTC फाइनल का 2 नॉक हम कंसिडर नहीं करते, अब तो श्रेयस फिट हो गया तो वो वापस आएगा. तो आपके पास जो 2 ऑप्शन थे, अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल, फॉर्म कह लो, किस्मत कह लो, वो दोनों ऑप्शंस वर आउट ऑफ द पिक्चर. एंड बुमराह के साथ यू कांट टेक दैट रिस्क नाउ, बिकॉज चेतन राइटली सेड 5 टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुडंट बी प्लेइंग ऑल दोस 5 गेम्स. अल्टरनेट गेम खिलाओ, क्योंकि उसको डलवानी 6-7-8 ओवर है, तो उसके लिए उसको खिलाओ. मेरे हिसाब से
नहीं यार, एक बात बताओ, if Shami is fit and Siraj is fit, why do you need to play Bumrah? Bumrah, yes. I think then before आपको, that they अरे need to मैं तो take कह the रहा हूँ call आपको whether सिराज और मैं तो कह रहा हूँ आपको सिराज और शमी को भी alternate टेस्ट मैचेस खिलाना चाहिए, and you should use these 5 टेस्ट मैचेस to give opportunities to some other pacers, क्योंकि आपको 10 ओवर से ऊपर पेसर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस 5 टेस्ट सीरीज में. yeah. So Bumrah should be rested, Shami and Siraj should be alternated, and then Yeah. you play some new fast bowler, give them a chance. Okay. Srini, Sahil just talked about Navdeep Soumya, Singh. before you ask him, I want to ask Srini a very quick question. अभी एक मेरे mind पे आया, chairman की बात हो रहा था. Srini, why does this always happen? You know, I clearly remember asking a few very senior officials in March, Ahmedabad test, chairman को लेके fight था. तो मेरे को आगे से सवाल आया कि जब मैंने बोला सर सिलेक्टर तो चेयरमैन का है नहीं, चेयरमैन तो है नहीं, तो टीम वगैरह कैसे पिक होगा? अरे अभी तो आईपीएल है ना, उसके बाद करेंगे. तो आईपीएल के टाइम पे क्या चेयरमैन और सिलेक्टर का कोई रोल नहीं होता? व्हाई डज इंडियन क्रिकेट गो इनटू दैट हाइबरनेशन मोड ड्यूरिंग दोस 2 months एंड लीव एवरीथिंग टू द फ्रैंचाइजेस? आई थिंक दे हैव अ वेरी क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग द आईपीएल टू, जस्ट कीपिंग एन आई ऑन No, द प्लेयर so फ्रैंचाइजेस. this is literally like saying कि अभी मतलब अभी मेरे ख्याल से क्या चेतन ही कह रहा था ना, कौन कह रहा था अभी जब मैं ज्वाइन किया था कि भाई आपने प्लान ही नहीं किया है कुछ, यू हैव लेफ्ट इट ऑल टू द वो आईपीएल. तो वो वाली बात हो गई. अच्छा अभी 2 महीने तो चलो कोई पूछने नहीं वाला क्योंकि लोगों का ध्यान तो बटा रहेगा ना. That's no excuse. I mean, you are right. I mean, the selection committee should be at work when the IPL is on. तुम कर क्या रहे हो? तुमको किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? करेक्ट. वीरेंद्र सहवाग भाई साहब बोलते हैं कि सैलरी कम है चीफ सेलेक्टर की, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, तो आप जो ऑन एवरेज अगर आप सैलरी दे बीसीसीआई, ये जो दे भी रही है बीसीसीआई, उस सैलरी पे योर वर्क इज नॉट कि भाई 3 महीने के आईपीएल में मेरा वेकेशन टाइम में वेकेशन नहीं होता है. वो आपने फिर भी बैठ के आपको मैचेस देखने, फिर भी आपको बैठ के एक अंदाजा लगाना है वेयर इज इंडियन क्रिकेट हेडेड फ्रॉम अ वाइट बॉल पर्सपेक्टिव. ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर. आप 50 ओवर टीम जो सेलेक्ट कर रहे हो, वो आप ऑन द बेसिस ऑफ कोई और टूर्नामेंट तो आप सेलेक्ट कर नहीं रहे हो. जो भी थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन हो रहा है नए टैलेंट का, वो आईपीएल में ही हो रहा है. आपने टी20 को ही एक हॉटबेड बना दिया है 50 ओवर सिलेक्शन के लिए भी. 50 ओवर आप कोई अलग से ट्रैक कर नहीं रहे हो, आप कोई विजय हजारे अलग से बैठ के देख नहीं रहे हो. And that is why I was telling Sahil that we need to sit down and understand Indian domestic cricket again. But the point being that IPL is where your entire white ball talent is coming out from. And if you are not sitting there, I'm sure that South Africa, England, Australia, वो लोग बैठ के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई आईपीएल का टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम जो है वो हमारे यहाँ किस बच्चे को ट्रैक कर रहा है. वो लोग खुद बैठ के ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ कोई कौन लड़के हैं जो हमने नहीं देखे हैं, बट वो कोई आईपीएल का टैलेंट स्काउट, कोई जॉन राइट बैठ के न्यूजीलैंड में मैच देख रहा होगा, या कोई मार्क बाउचर बैठ के साउथ अफ्रीका में मैच देख रहा होगा. वहां पे वो रॉबिन पीटरसन है साउथ अफ्रीका में, ही इज द टैलेंट स्काउट फॉर लोकल साउथ अफ्रीकन टैलेंट फॉर मुंबई इंडियंस, राइट. तो ये लोग वहां बैठे हैं, काम कर रहे हैं. सो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू. दे आर फ्रेटर्निटी गाइज seem to look at those 3 months, 2.5 months of IPL as some kind of a vacation. अरे अभी तो IPL है ना यार, देख लेंगे. अभी तो अभी आपको वर्ल्ड कप टीम जो सेलेक्ट करनी है, आप देखो, आप किसी को रैंडम पूछ लो कि अच्छा वो आईपीएल आ रहा है, वर्ल्ड कप टीम सेलेक्ट करनी है, वो आपको बोल भी देगा अरे यार वो तो लास्ट आईपीएल पे बेस्ड ही होगा वो, क्योंकि इस बार तो जब आईपीएल चालू ही होगा, जब टीम तो सिलेक्ट हो जानी है, इस बार तो कुछ नहीं होगा, राइट. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग. हालांकि द फैक्ट इज, द ट्रूथ इज कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ नहीं कर रही. मतलब आई होप अजीत विल डू थिंग्स डिफरेंटली. आई एम होपिंग अजीत विल सेट सम काइंड ऑफ अ बेंचमार्क. बट आप अगर देखो सिलेक्शन कमेटी कुछ नहीं कर रही. आप आईपीएल को ट्रैक करते हो, सिर्फ आईपीएल को ट्रैक कर रहे हो. आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप कोई और टूर्नामेंट को ट्रैक नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्रीम जो है व्हाइट बॉल का वो आके आईपीएल खेल रहा है. तो आप जो भी अपना टैलेंट उठा रहे हो, आप आईपीएल के बेसिस पे उठा रहे हो. जो भी आप इंडियन टीम को जोड़ लो ना, वो रिंकू हो, जिसको आपने ऋतु हो, जिसको आपने अपॉर्चुनिटी दिया, कहां से आए लड़के? सारे के सारे आईपीएल से आए हैं. आप इनको टी20 खिला रहे हो, वनडे खिला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और टेस्ट क्रिकेट में तो हम देख रहे हैं आपकी दिमाग कितनी चलती है. आप वहां गए हो, वो इंडिया ए में आवेश खान ने 5 विकेट लिया, आपने सडनली ओवरनाइट डिसाइड कर लिया अरे यार इसको ले आओ सेकंड टेस्ट के लिए. ठीक है, तो आप ऐसे तो आप चल रहे हो, which shows that you have zero planning in place. So let me put it this way.
whatever this selection committee until now has been doing, the contribution has been zilt, zero. You know, that put together along with a pathetic coaching combination, which has been put in place without any thought whatsoever, is making us look so horrible right now. Yeah. Do not blame the cricketer. Yeah. क्रिकेटर की कोई गलती नहीं है. Shini, ये I just want to ask you one thing. You know, Sahil just mentioned about Navdeep Saini at length. You know, he can bowl 25-30 overs in a day and everything. So ये जो जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है, ऑफ कोर्स दे हैव ऑल प्लेड टेस्ट क्रिकेट, राइट? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं. डोंट दे नो द वर्ड्स लाइक वर्क हॉर्स? जो एक बॉलर इतना स्ट्रेच कर सकता है, इतने ओवर्स डाल सकता है, इतने स्पेल्स डाल सकता है. आई मीन दे डोंट थिंक अबाउट व्हाट इट इज. आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द सिलेक्शंस. व्हाट डू यू हैव टू से? 100. See, when there are slightly more capable men in place, obviously they have taken the right calls here. Yeah. You know, were you expecting a Chetan Sharma to take a call based on a gut? You know, I wasn't. And I was so happy the day that वो क्या स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था ना, मेरे को इतनी खुशी हुई. मैंने कहा कोई और तरीका तो था नहीं इसको बाहर निकालने का. कम से कम चलो इसी बहाने ये बाहर तो जाएगा. मुझे see, people tend to confuse. You know, somebody on Twitter, very well respected journalist, came to me saying, don't put him down like that. He's an India player. As an India player, I have my respect. Then you don't come into this and do what you're doing. You stay away. You stay away doing what you're doing. You don't go. And you have all my respect. तुम चाहते हो कि just because तुमने 25 साल पहले इंडिया के लिए खेला है, on the basis of that तुम आज पैसे कमाओगे. पैसे कमा के तुम कोई भी न्यूज चैनल के सामने कुछ स्टिंग ऑपरेशन करके बकबक करोगे, ओके, बकवास करोगे, और तुम्हारी टीम जो है वो तुम्हारी जो काम है वो काम तो तुम्हारा दिख रहा है ना. सिलेक्शन कमेटी का जो काम है ना, उसका ब्यूटी क्या है? आप जो गंद कर कप्तानी आप बोलते हो ना, कप्तान के जो भी कप्तान कर रहा है, रिजल्ट भाई वहां दिख रहा है ना, ऑन द फील्ड दिख रहा है. ये थोड़ी ना आपको कि क्वार्टरली एंड पे पता चलेगा, फाइनेंशियल ईयर एंड पे पता चलेगा. आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट अगले दिन सुबह टॉस के बाद में पता चलने वाला है. तो दैट इज वेयर देयर इज नो आंसरेबिलिटी. देयर इज जीरो आंसरेबिलिटी. वो बीसीसीआई ने रिव्यू कमेटी मीटिंग रखा वर्ल्ड कप के बाद में दिल्ली में. ये साहिल मल्होत्रा अटेंड करके आया रिव्यू कमेटी मीटिंग. मेरा सोचने कि तुम किस चीज की रिव्यू करने वाले हो, पहले ये बता दो. पहले के 10 मैच की या 11वें मैच की जो हारे हो तुम? 10 मैच की रिव्यू अगर तुम कर रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ वो टीम को इनाम दे दो तुम, जिस हिसाब से उन्होंने खेली है. और अगर 11वें मैच की रिव्यू कर रहे हो तो पहले फुर्सत में कोच को सैक करो. तुमने कोच को एक्सटेंशन दे दिया है. क्या कर रहे हो? Okay, I have a comment lastly, before ending, I have a comment for Chetan bhai. Chetan, Harsh is asking, do we have any chance of Virat Kohli as captain? We want him back as test captain. इन्होंने दो बातें कही हैं. आप दोनों में से किसका जवाब पहले दोगे, पहले ये बताओ. नहीं, I don't think he is the only option as captain, to be very honest. I'm not going to talk as a fanboy. So I think Ravichandran Ashwin, अगर आपको एक stop gap arrangement चाहिए, अगर मैं आज अजीत अगरकर की जगह पे हूँ, I would make Ravichandran Ashwin test captain. After conversation with Rohit Sharma to set out a plan कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी करनी है नहीं करनी है, क्या वो इससे बेहतर कर सकते हैं नहीं. विराट कोहली, there are just finishing quickly, Srini, then you can answer. विराट के साथ देखो, it's not going to be that easy. There's always going to be an ego issue there, that the way he was treated, and he's right to be upset. The way he was treated was absolutely pathetic, absolutely shambolic. You cannot treat, let alone a player like Virat Kohli, the way he was treated. You cannot treat an Indian captain. He was Indian captain at that point, and he had so much to give. He had given so much to Indian cricket. You cannot treat an Indian captain like that. So from that perspective, will Virat Kohli say ki, okay, you know what, I'm happy to come back? I don't think so. Okay. Also, we have to consider that 3 years before 23, he did not score too many big runs across formats. So now he's finding that rhythm again. Now he's finding that form again. Will he want to say, you know what, chuck this aside, मैं फिर से captaincy करता हूँ?
You know, because when you're captain, there are so many distractions. Your mind is thinking, "Kya aap single mind se focus kar sakte ho?" Abhi he just has to focus on his batting. He has nothing else to do, right? So I don't know. Obviously, I would love to have Virat Kohli back. I think I covered a lot of my test cricket that I've covered was MS Dhoni and Virat Kohli, and Virat Kohli was brilliant with the test captaincy. So obviously there were some negative points there as well, but उनको थोड़ा अभी side रखते हैं. I would love to see, you know, how Virat does in this phase, because when I covered MS Dhoni as test captain, he was presiding over the transition. एक डेढ़ 2 साल जो था उन्होंने ट्रांजिशन किया 2012 to 2014 वो पूरा ट्रांजिशन था. Now there is another transition. How will I want to see how will Virat Kohli captain the side when this transition is ongoing? Because he captained the side which was fantastic, which was brilliant players, all at the height of their maturity. Now this would be a very, very different challenge for Virat, but I don't see it happening. I think Srini will give a better perspective. But like I said, there is not just the one option. For me, if I were in Ajit Agarkar's shoes, if I have to pick a new test captain, Ravichandran Ashwin, for the next 1.5 years at least, he can easily be the test captain. Yeah, Srini, you were saying something. No, so on the same thing, there's a slightly bigger picture to that very question that came up on the Virat Kohli thing. पहली बात तो वो आएगा नहीं. तो वो जब कर रहा था तो तुमने उसको रेड बॉल कैप्टनसी तभी उसको तब उसको बुला के बात करना चाहिए था उससे कि भाई मत जा, रुक जा, 2 साल के लिए मत जा. तुमने तब नहीं किया, वो अब नहीं आएगा. तो उसको तो छोड़ो. पॉइंट इज तुमको जो करना है, तुमको कप्तानी विराट को देनी है, तुमको कप्तानी रोहित के पास रखनी है, तुमको कप्तानी केएल राहुल को देनी है, तुमको कप्तानी जसप्रीत बुमराह को देनी है. देखो एक मैंने एक ट्वीट डाला था मैंने, द डे Virat Kohli had stepped down as the captain of the Indian team as test captain. Okay, I clearly remember where I was standing, what I was doing when that press release came, and who I had spoken to just 1 hour before that press release. I knew that the statement is coming, and when that statement came, I put out a tweet immediately saying KL Rahul is the next captain of the Indian Test team. Together today, people remind me about that tweet. It wasn't me, it wasn't some light bulb that was there in my mind कि वो विराट KL Rahul को कप्तान बनाएंगे. नहीं, this is what Rahul wanted, and this is what Rahul had proposed to Indian cricket, to the selectors and to the administration. By Rahul I mean Rahul Dravid, the coach. This is what the coach of the Indian team had suggested to the Indian cricket, whatever, selectors, administrators, whatever, that we need to invest in KL Rahul as the new captain, basis which it was decided. It was decided. Except that there were people in Indian cricket administration who at that point had cold feet. There was mixed thinking. Half of them thought, half the thought was that he's not ready for test captaincy. The other half of the thought was that we may not come out looking very good in the scheme of things, right? And that is why, because the white ball captaincy was anyways going to be handed over to Rohit Sharma, it was a convenient way to just hand over everything to Rohit. It was less of a headache at that time. Okay? Basis which these decisions were taken. It wasn't like they had identified Rohit as India's next red ball captain. They hadn't. They had identified him as the next white ball captain. So, everything, I can't spell out everything in black and white. There are certain things which always remain gray. Having said that, let me reiterate that neither was there a plan at that time in terms of, how you want to pursue your red ball priorities. Neither has been there a plan now in terms of how you want to pursue red ball. Just to quickly, kind of wrap this up, in 2014-15, when MS was contemplating stepping down as the red ball captain of India, Chetan talked about the transition. That transition was at a turning point where Virat had been identified as India's next leader, the tiger in the room, waiting to mark its territory. Okay? So, on the basis of that, it was Virat's team in the making from 13-14 onwards. And captaincy, giving away the captaincy to Virat was just about, transition, that the final handing over of the sword kind of a thing, right?
That was the final mark of giving the captain. Has that been there now? No, it has not been there. Why? Because Virat left abruptly. Why did he left Virat? Why did he leave abruptly? That BCCI has itself to blame, right? Having said that, have you considered that a proper healthy transition did not happen? And for a proper transition to happen, there are only two ways to go about. You either hand it over to someone new today and let it go forward, whoever it is, whether it, as Chetan says, you identify Ashwin, give it to him for 1.5 year. I don't agree with it, but as he says, give it to Ashwin 1.5 year and then see where it goes. Or you hand it over to a youngster today who kind of takes the charge for the next 3 to 5 years, or you go back to square one. Reason? Or you go back to square one, make Virat agree to this, or you say, no, right now let me continue with Rohit. Yeah. My point is, why I interrupted and why I said I wanted to add something was, whatever you do, start thinking about it now. When are you going to Australia? You're going to Australia in December. Like, for example, England is coming here after the South Africa series. Rohit's grandmom can captain that series. You really don't need to think twice. You आप एक एंड से जडेजा लगाओ, दूसरे एंड से अश्विन लगाओ, आप और राहुल द्रविड़ को कप्तान रखो, क्यूरेटर राहुल द्रविड़ को साथ में लंच करवाओ, वो सीरीज आप आधा तो वैसे ही जीत जाओगे. ठीक है. पॉइंट इज, आपने सोचनी है, आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया दिसंबर में, और आपको वहां पे 2 बार आप जीत के आए हो, आपको वो सीरीज को प्रोटेक्ट करनी है, आपको वहां पे अपना डोमिनेंस आपको डिफेंड करना है. वहां आपका क्या प्लान है? तो आप अक्टूबर तक मत रुकिए, नवंबर तक मत रुकिए वो सोचने के लिए. उसको बारे में आप यहाँ से सोचना शुरू करो, क्योंकि अगले साल just one line, which is why I said, because obviously they don't have a plan, and there is no youngster who is actually making a claim. Can you imagine if we had made Shubman Gill the captain? Can you imagine? कहाँ से ये बात आ रही थी? I don't know. No chance मत कहो, हमने ही बैठ के शो किया है, आपने ही होस्ट किया था कि शुभमन गिल को क्या कैप्टनसी बनानी चाहिए. I was not in any favor of that. क्या कैप्टनसी देनी चाहिए. क्रिकेट मैच में भी हमने ये शो किया है. What I'm trying to say is, Rishabh Pant was such a huge loss at the time when he had that accident. I can't wait for him to come back, and I hope he comes back fully fit and just continues from where he left off, because he would have been such a great option as captain across formats. But we did not have that option. So right now we do not have a youngster. Right now we do not have a youngster who can really step up into this transition. No Shreyas Iyer, nobody. हमारे पास सिर्फ 2 options हैं, एक जसप्रीत बुमराह और एक रविचंद्रन अश्विन, apart from Virat Kohli and Rohit Sharma. Bumrah as test captain makes very little sense because he can't play all test matches. He just can't. Take a last one. Sahil. Okay, Sahil. Quick. No, Which is why I have Ashwin, because you do not. He can be a stopgap like Anil Kumble was till an MS Dhoni is ready to take over, or till the next guy is ready to take over. Yeah. So I have a quick rapid fire for everyone. First, I'll start with Chetan. Chetan, we are undergoing a transition. We have Yashasvi Jaiswal and Rohit Sharma as the opener. Name 2 backup openers which come to your mind. We are under a transition, so we could, probably need options. 2 backup openers which come to your mind. एक तो ऋतुराज ही है. Opener और 3. यार अब ये इतना यहाँ पे वो चल रहा है. No, मैं इसीलिए स्पेसिफिक में जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक हमारा ट्रांजिशन की एक वो दुर्भाग्य स्थिति. I think Ruturaj would be a good option. Wow. And I will have to take a look at the India A. Ishwaran, yeah. Abhimanyu Ishwaran is the one who usually Ishwaran does it. So, never coming close to but Ishwaran ko they got him as a backup batter. So I was under the impression कि आप उसको middle order में खिला रहे हो. So like I'm not exaggerating. I'm just stating facts. He is the most exaggerated player in the Indian domestic circuit. Which is fine, but I'm just saying. मैं आपको सिर्फ India A के basis पे बोल रहा हूँ क्योंकि I tried and I could not find anybody who punched a hole in the last Ranji season. Absolutely. I went back and took a look in the Pacers department. नहीं ऐसे ही कह रहे हो. मैं इसीलिए आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ. पहले कल 10 नाम गिनाए थे. एक बार मैं बात बोल दूं, कल 10 नाम गिनाए थे. मैंने जाके 10 के 10 नाम के स्टार्ट्स चेक किए. आप 8 मैच में 30 विकेट ले रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना रणजी ट्रॉफी में. Well, quickly, what do you say? As I said, there was nobody punching a hole through the Ranji trophy. मैं quick यही rapid fire पे आ रहा हूँ. Srini, what openers come to your mind? 2 openers.
Rohit, In like the right now, I will. I mean, I'm not going to digress, or I'm not going to distract myself from Shubman. I'm going to continue with Shubman. no, no, Whatever the Opener. at three, noises, no. At huh? three, He's a no. Shubman at At three, Opener. no. three. For me, so that's what I'm saying. Let me complete. So for me, Shubman needs to go up. You know, the number one needs to retire. yeah. Shubman needs to go up. और मैं अगले ये इंग्लैंड सीरीज को जाने दो. मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ. अगले 2 साल की बात कर रहा हूँ. चलो हाँ? तीन का अपना स्पॉट ओपन है, ऋतुराज भी आ सकता है, So जायसवाल नीचे आ सकता है. for me, right now in the current scheme of things, the 2 openers I'm looking at are Yashasvi and Shubman. Shubman Gill. Okay, and मेरे को Okay. अगर एक makeshift चाहिए तो वो injury ये वो replacement चाहिए तो whatever, you know, whether it's an Ishwaran, whether it's a Mayank Agarwal, whoever is available. Point is, my 2 regular openers are Shubman Gill and Abhimanyu Ishwar. Number 4. Yashasvi Jaiswal. Number 4 2 साल तक. Who's your number 3 if 2 Shubman साल opens? तक. Number 3, शुभमन sorry. तो नंबर 3 तो चलो ऋतुराज हो गया, आप यशस्वी को नीचे ले आओगे, नंबर जायसवाल 3 करना तो है. एनीवेज आप विराट से आइडेंटिफाई करवाओ, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द रेस्ट ऑफ द लाइनअप इज. आप आज आइडेंटिफाई करो आपका विराट आपका नंबर 3 है या विराट आपका नंबर 4 है. ठीक है, अब तक क्योंकि आपके पास चेतेश्वर पुजारा था इसलिए आप विराट को नंबर 4 पे आइडेंटिफाई कर रहे थे. मेरा ये मानना है कि विराट शुड स्टार्ट बैटिंग एट नंबर 3. यू नो इट इज यू नो दैट एक्सपीरियंस. Okay, okay. So one second. Since I'm on the subject, एक मिनट रैपिड फायर चलने दे. once you have identified that, whether it's 3 or 4, whatever it is, whether it's 3 or 4, 2 साल you don't touch that position. You don't think तो वो एक जो पोजीशन है 3 है या 4 है जो भी है आपका, आप जहां पे भी विराट को खिलवाना चाहते हो आप उसको लॉक कर दो और 2 साल आप उसके बारे में सोचोगे नहीं. उसकी मर्जी, उसको 3 पे खेलना है, उसको 4. सचिन तेंदुलकर wanted to play at number 4 period. Nobody was allowed to touch that position. So you leave this to Virat. Let him take a call. Yeah. And आपका केएल राहुल उसमें बैठता है आपके स्लॉट में. वो मैं अभी का तो मैं समझ गया. What if अभी इनके साथ जो पेशेंस है ना हमारा, वो इंग्लैंड सीरीज में एग्जॉस्ट हो जाएगा. अगर 5 टेस्ट मैच के सैंपल साइज के अंदर आपको श्रेयस अय्यर रन करता हुआ नहीं दिखेगा, प्रॉब्ली केएल नहीं करता हुआ दिखेगा. इंग्लैंड में बना लेगा रन. इंडिया इंग्लैंड की बना टेंशन देगा. नहीं है. मैं समझ गया, बना देगा. नहीं बनाया तो आपके पास बैकअप क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ. ट्रांजिशन अगर हम कर रहे हैं नहीं है ना, नहीं है अभी बैकअप. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे बैकअप चाहिए भी नहीं. मैं कह रहा हूँ कि बिटवीन नाउ एंड द सीरीज इन इंग्लैंड, दिस इज द स्क्वाड जो मैं पकड़ के चलूंगा. मुझे बैकअप नहीं चाहिए. No. अभी तो चाहिए ही नहीं. आई एम सेइंग प्लान फॉर ऑस्ट्रेलिया. अभी तो you know you can't do anything. On current evidence, Shreyas can't bat in England. Sorry. No, 1 second. Not England, against England. Against England in no, and in England बोल रहे हो. Next year in England you're saying, not this year. Next year in England, right? In England, That's what. Yeah. Fair enough. So you consider the kind of, you know, a change here, a change there. You remove. We already need a number 5 replacement. I'm telling you this. Fair enough. I also agree that next year when you go to England, you may not consider Shreyas in your playing 11, first 11. Understood. Yeah. You still have another 8 months, 10 months to figure that out. Until then, you don't tinker. My position here on this is very simple. You do not right now. You don't tinker with your top 4 or 5 batsmen, just allowing them to be. My only thing is I don't see Rohit. Pant aega. Pant will not make a comeback before IPL, and he is not going to be at his finest best when the IPL begins. So I think Australia is a realistic goal. Australia एक उसको आके उसको सेटल होने दो, उसको रिकवर होने दो. मेरे को ये समझ में नहीं आता why have people in such a hurry to put a gun to his head. उसको अपने पेस पे आने दो यार, वो जब ठीक होगा आ जाएगा वो. He's in very good hands. I personally think he needs an entire season of Ranji under his belt. Only that then also is true. वो भी हो सकता है. Only then he can come back. Possible. A good domestic season will do a world of good to him. Maybe Australia could be the tour. If Pant comes and if he clicks the same form that he was in, Indian cricket doesn't have better answers, then that is as good as it gets. My point is simple. I'm saying if you were to ask me, if it was up to me, I would get an Ajinkya Rahane back. I would get an Ajinkya Rahane back in the batting order and make sure he is there with me until India's tour of England. But it's not a popular choice. I put it out on Twitter, like, look at the general sentiment. No, I support it. I'll just end this. I would support it.
बशर्ते मैं एक लास्ट बशर्ते सॉन्ग वो लास्ट रन बनाए. The problem No, is if you I need to end the session. I need to end the session. लास्ट वर्ड श्रीनी, अगर अभी भी 2023 में भी मैं रिपीटेडली, मेरे को प्रॉब्लम क्या लग रहा है ट्रांजिशन पीरियड से, जो 14, 15, 17 और अब 23 के अंदर, आप 23 में भी अभी भी अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे हो, तो आप करो, रणजी ट्रॉफी क्योंकि बंद कर दो. आपने एक मिनट so what? इंडिया ये करो, बंद कर इसलिए दो. क्योंकि what? आपने As 20 long as I want- long as you are filling positions around him, हाँ एग्जैक्टली and आपने as कौन long से as you are replacement आप identifying ढूंढ people लिया who will कि आप take आज मेरे over को for बोल रहे you. हो कि अजिंक्य रहाणे की जरूरत नहीं है. आप कोई भी No, बड़ा wait, सीरीज, wait. बड़ा मैच, बड़ा गेम, No, wait. लड़का खड़ा हुआ है Just उधर. last line. Just last line. As long as you are identifying around him, around Virat, and once they exit the scene after 1.5 years, you have ready replacements coming in. Yeah. Not a transition. Ready replacements. There are different ways to do it. Virat Kohli was a ready replacement when Sachin Tendulkar exited the scene. Pujara was a ready replacement. Rahane was a ready replacement. इंडियन क्रिकेट को रेडी रिप्लेसमेंट्स बनाने हैं इस टाइम पे. हमारे पास वो नहीं है, which is why we are struggling. I'll just end this session with two things. Okay, you know, transition problem क्या हो रहा है ना साहिल भाई, पुजारा और रहाणे को आपने एक साथ बाहर कर दिया. That is wrong. आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते. Experience matters. रोहित के साथ टेक्निकली तो पहले पुजारा गया ना, रहाणे टेक्निकली तो पहले पुजारा गया. इस ओवरसीज सीरीज में दोनों बाहर है. That's it. और वो दिक्कत कर रहा है. आप एक और चीज देखो, in this today's day and age, the kind of cricket that top teams, the top center teams are playing, you know, in this whole era where baseball seems to make so much noise and all, I do agree that, you know, both Pujara and Rahane in the middle order is suddenly sounds like a bit of a crowd. You know, you need that refreshing change. To that extent, I agree. If you're looking for a change. बट आप बोलोगे भाई सबको उठा के बाहर फेंको, आप तो ऐसे नहीं है कि आपके पास टैलेंट की इतनी मतलब फ्लड है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में जी रहे हो. आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में जी रहे होगे, बट आप रेड बॉल क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में जी नहीं रहे हो. एंड टू माय माइंड बिफोर दिस गोज ऑन, लाइक अजिंक्य बस इज अ सॉलिड बैटर है, सॉलिड बैटर, द काइंड ऑफ बैटर यू नीड इन योर रेड बॉल क्रिकेट मिडिल ऑर्डर. बॉस मिलता नहीं है, आपके पास है और आप पता नहीं क्या ढूंढने निकले हो. And second comment that I wanted to make कि BCCI selection committees and team management को should take tuition lessons from Sahil Malhotra and follow the age group matches. Well, on that note, I'll end this session. Sorry, last एक मिनट. I think वो एज ग्रुप छोड़ो, अभी जो कहानी का सार निकला ना, अभी हम ओपनर्स नेम नहीं कर पा रहे, हम नंबर 5 रिप्लेसमेंट नेम नहीं कर पा रहे, हम रहाणे पे जा रहे हैं. मैं बॉलर्स पे तो आया नहीं. अश्विन जडेजा का जो होल बनने वाला है ना, एक पूरा मतलब होल क्या हो तो गड्ढा इतना बड़ा होने वाला है कि पूरी दिल्ली समा जाएगी, क्योंकि आपके पास उन दो स्पिनर का तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं. आपके अक्षर पटेल को अपना लीडिंग स्पिनर बनाओगे टेस्ट में, और किसको पुलकित नारंग को खिलाओगे या मानव सूतर को खिलाओगे जो 10 फर्स्ट क्लास गेम खेला है लेफ्ट आर्म स्पिनर, या सौरभ कुमार जिसका योयो टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा पिछले 2.5 साल से. मतलब आप स्पिनर की तो बात कर नहीं रहे. लास्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित का, जब रोहित आया था, मुझे याद नहीं कौन आया था, क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द टू स्पिनर्स कि कितना ये लंबा जाएगा, क्योंकि वो ही थे रीजंस जो आप बीजीटी के अंदर इतना चैलेंज कर पाए थे. उनको बाहर निकालो आप. या just one line on this, because you said this and I'll make this very very clear. ये जो सीरीज आ रही है ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, in this series it's very important our third spinner खिलाएगी इंडिया. Yeah. Third spinner should not be Akshar Patel. It will be unfair on him. It will be unfair on him. And exactly, Mr. KK, you're absolutely right. It has to be Kuldeep Yadav. Yeah. Has to. चलो इंग्लैंड सीरीज तो आ गई, अभी साउथ अफ्रीका वाली बचा लो. वेल, थैंक यू जेंटलमैन फॉर I will end this session. ये यार यहीं पे तुम्हारा हो गया, तुम्हारा ऐश की जगह सीरीज में जीतने. Let's remind our viewers before we sign off that we have a special show on the year it was 2023. Tomorrow, very special feature where we will be looking back at Indian cricket in 2023, starting from when we got the probables in place for the 2023 World Cup to the Boxing Day Test match. We'll cover anything and everything with regards to Indian cricket, board matters, Women's Premier League, Women's Cricket, how the team fared, the injuries, the comebacks, the NCA, all that jazz. Coach Ajit Agarkar. So please आइएगा, सवाल पूछिएगा और शेयर करिएगा. जरूर ऐड कीजिएगा. 7 बजे we'll go live.
tomorrow at on 30th December at 7 we'll be live. So do join us. And well, thank you, gentlemen, for joining this live session. It was lovely chatting with you. Bye bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।